All right, viewers, big news coming in right now. The Enforcement Directorate is at Arvind Kejriwal's residence. This has happened hours after he was not given immunity from the Delhi High Court. He had wanted immunity against an arrest, especially in election season. But the latest that is coming in right now is that the Enforcement Directorate team is right now at Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's residence, viewers. What does this mean? Is an arrest impending? A big question mark there. But this was his 9th summon, especially where it came down to the liquor policy, where the Enforcement Directorate comes into question. And he had not appeared, calling the summon illegal. He's also been summoned by the Enforcement Directorate in the Jal Board case. But these are visuals that are coming in from 6 Civil Lines, National Capital, the residence of the Chief Minister. And you can see an Enforcement Directorate team right outside Arvind Kejriwal's residence. Is this a routine in terms of follow-up? Are they coming in to question him? Are they coming in to raid him? Is there going to be an arrest? Let's cut across right now immediately to our reporter who's joining us live. All right, we'll cut across to our reporter in just a short while, but let's quickly dip in and get in an understanding. You can see the ED team right outside the Chief Minister's residence, the staff of the CM office. Guys, what? Why is there so... We're going to play those visuals again for our viewers. Now, what has happened, viewers, is that the Enforcement Directorate team, hours after the Delhi Chief Minister did not get any reprieve or immunity from arrest where the Delhi High Court was concerned, he had approached the Delhi High Court against the warrants that have been issued by the Enforcement Directorate. The High Court refused to intervene. Cutting across to Shreya Chatterjee. Shreya, will you give us the latest? The ED team outside the CM's residence, is this a raid? Are they looking to arrest him? Of course, what are you picking up from your sources? All right, we're going to cut across. We're going to cut across to Shreya in just a short while, but these visuals streaming in live, viewers. Now, this is Civil Lines, where the Chief Minister's residence is. You can see a number of ED officials interacting with the officials from the Chief Minister's house, the CMO, and they seem to want access. What is this regarding? Let's cut across immediately to my colleague Shreya. Shreya, is this handing over a notice, another summon? Is this a raid? Any information coming in? Well, the initial information that is coming in, Preeti, that this looks like a summon for Arvind Kejriwal to join investigation immediately. This after the High Court clearly denied to give any protection from arrest. Arvind Kejriwal had moved against the 9th summon that the Enforcement Directorate had issued to him in the liquor policy case. Today, he did not get any protection, and now the ED team has reached Arvind Kejriwal's residence. What we clearly do understand. This is a summon. The last few summons haven't been handed over personally. Why is this summon being handed over personally? Could this also be a raid? Well, yes, really, this is something that the Enforcement Directorate teams, as far as sources, initial information is that they are serving the summons to Arvind Kejriwal. The process will then further follow. Clearly, we do know that because Arvind Kejriwal has been evading summons, there were 2 options left with the ED. One was to visit his residence, and the second was to get an NBW from court. Definitely, this is the second option that the Enforcement Directorate team has opted for. So, Shreya, can we say, are we to understand that this is, of course, a summon being served, but this is also a possible raid at the Chief Minister's residence, correct? Well, yes, definitely, Preeti. This is definitely that process, because first, as per the protocol, a summon will be served asking him to join the investigation right away, and then the next process will begin from the Enforcement Directorate. Shreya, do stay on with us. Let's cut across to Arvind Ojha, who's joining us for more details right now. अरविंद, आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक समन सर्व हो रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री को? क्या ये एक रेड, ये छापा भी मान सकते हैं हम?
नहीं, देखिए अगर सम्मन भेजा था तो 9 सम्मन के लिए जब भेजा गया था तब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर नहीं गई थी। लेकिन यहाँ पर ईडी के टीम के कई अधिकारी मौजूद हैं और जो दिल्ली पुलिस की टीम है, भारी भरकम दिल्ली पुलिस की टीम, इलाके के जो डीसीपी वो खुद भी मौके पर मौजूद हैं। तो अब ये देखना होगा कि आगे का कोर्स ऑफ एक्शन ईडी का क्या रहेगा, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान किसी तरह की राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है। साथ ही साथ अगर बीते घटनाक्रम की तरफ जाएं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि अब से 3 से 4 दिन पहले ईडी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें ये बाकायदा खुलासा किया गया था कि कविता की गिरफ्तारी के बाद उस प्रेस रिलीज में कहा गया था कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर जो एक्साइज पॉलिसी है उसमें बड़ा स्कैम किया और के कविता ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए थे। तो ये स्टेटमेंट आना मतलब कि ईडी कहीं ना कहीं अब इस इन्वेस्टिगेशन में एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है। और इन्हीं सबके बीच जब आज राहत नहीं मिली, उसके बाद ईडी की टीम जो अरविंद केजरीवाल है उनके घर पर पहुंची है और कई अधिकारी इसमें सीनियर लेवल के ईडी के ऑफिशियल वो मौजूद है। साथ ही बता रही हैं अरविंद, जो सोर्सेज बता रहे हैं, कह रहे हैं कि लगता है इस बार अरेस्ट इमिनेंट है, जैसा पूरा हमने देखा था वाकया जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हुआ था, अभी वैसे ही उसी लाइन पे जा रहा है। नहीं देखिए, अब ये तो जाहिर सी बात है, ईडी अगर ऐसा कोई कोर्स ऑफ एक्शन लेगी तो उस पर स्टेटमेंट जारी करेगी। अभी की अगर बात करें तो ईडी की टीम वहां पर मौजूद है। और देखिए ये जरूरी है कि आज हाई कोर्ट में क्या हुआ, आज हाई कोर्ट में बाकायदा जो सुनवाई चल रही थी उसमें ईडी ने कहा कि अगर हम चाहेंगे तो गिरफ्तार कभी भी कर सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं रहा है। जब हाई कोर्ट में हियरिंग चल रही थी तो जो जिस तरह से बाकायदा के कविता को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ईडी ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया, ऑफिशियल स्टेटमेंट प्रेस रिलीज जारी किया। उस प्रेस रिलीज का आज हाईकोर्ट की सुनवाई में भी जिक्र है, जिसमें बाकायदा प्रेस रिलीज में कहा गया कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल, यानी ऑफिशियल प्रेस रिलीज में पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम ईडी ने 3 से 4 दिन पहले जारी किया था। और इन सब के बीच आज हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली और ईडी का पहुंचना, कोई ना कोई एक्शन बहुत मुमकिन है कि देखने को मिल सकता है। अगर जैसे सम्मन की बात करें तो 9 सम्मन कभी अरविंद केजरीवाल के घर इतनी भारी भरकम टीम इतना सम्मन लेने के लिए कम से कम तो नहीं पहुंची थी।